Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra and today we are going to study our next phylum, that is the phylum Coelenterata or Cnidaria. Now we are going to deal with the general characters of this phylum. That is, the first point says that the organisms of the Coelenterata are all aquatic. Some are freshwater and mostly marine. That means कि जो भी ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेटा के होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक मतलब कि पानी में रहते हैं. और कैसे पानी में रहते हैं? सम फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और मोस्टली मरीन, और ज्यादातर ये मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि समुद्री पानी में ये देखने को मिलते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ऑर्गेनिजम्स आर सोलिटरी और कॉलोनियल, सीडेंटरी और फ्री लिविंग. दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिलेंट्रेटा के, या तो वो सॉलिटरी रहेंगे, अकेले रहेंगे, अलोन, और या फिर वो कॉलोनी में पाए जाएंगे, झुंड में देखने को मिलेंगे. सीडेंटरी हैबिट शो करते हैं या फिर वो फ्री लिविंग होते हैं. सीडेंटरी मीन्स कि या तो वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे, इधर उधर कहीं मूव नहीं करेंगे, और या फिर वो फ्री लिविंग होंगे, वो अपना आराम से पानी में मूव करेंगे, तैरेंगे उसी में. इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? रेडियल होती है. रेडियल बॉडी सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है. द बॉडी सिमेट्री ऑफ द फाइलम Coelenterata इज रेडियल and this phylum could be divided into two identical equal halves passing the line passing through the center. If the line is passing through the center, suppose this is the center point, और अगर हम किसी भी प्लेन से इसको काटेंगे, लाइक यहां से, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में. अगर हम इसको ऐसे भी काटेंगे तो भी ये दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर हम यहां से इस प्लेन ऑफ लाइन को हम ले जाएंगे तो भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और अगर हम यहां से भी इसको काटेंगे तो भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. सो रेडियल सिमेट्री इज दैट सिमेट्री इन विच द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर could divide the body into two identical halves. ऐसी प्लेन से हम काटेंगे बॉडी को जहां से जो लाइन सेंटर से पास होगी, और डिवाइड करने के बाद जो बॉडी है वो दो आइडेंटिकल सिमिलर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. तो ये जो सिमेट्री हमें देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं रेडियल, और ये जो Coelenterata है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. फिर हम आ जाते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में. द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाउंड इन द Coelenterata इज द टिश्यू लेवल. फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज सीन इन द Coelenterata, एंड प्रीवियसली वी हैव सीन द cellular level of organization was there in the phylum Porifera, and the next phylum, the upgraded phylum, that is the Coelenterata after the Porifera is Coelenterata, and in which the tissue level of organization was seen. मतलब जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से हट करके, मीन्स सेल्स पोरिफेरा में हमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब टिश्यूज के फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है. Then we come to the body wall. Body wall is diploblastic. Diploblastic means that two cellular layers was seen in this, in their phylum. That is, the first is the ectoderm, and the second is the endoderm. And in between ectoderm and endoderm, there is a gelatinous substance that is known as the mesoglia. So this type of body wall is known as the diploblastic, where two types of cellular layer is there.
वन इज द एक्टोडर्म एंड अदर इज द एंडोडर्म. सो द बॉडी वॉल जो है सिलेंट्रेटा की वो कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक शो करती है. डिप्लोब्लास्टिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्यूलर लेयर देखने को मिलती है, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म. और ये दोनों लेयर कैसे सेपरेट होती हैं, जेलेटिनियस सब्सटेंस जो इनके बीच में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया, उससे ये सेपरेटेड होती हैं. तो यहाँ पे जो बॉडी वॉल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये दो लेयर के फॉर्मेशन की वजह से. अच्छा, now we come to the next next point, that is the type of individuals that are formed in this phylum is, first is the polyp and the medusa, means two types of individuals could be seen in this phylum. So these forms are polyps which are attached to the substratum, they never move, and another is the medusa which are found as free swimming. मतलब जो दो सिलेंट्रेटा के जो फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो एक पॉलिप फॉर्म शो करता है और दूसरा फॉर्म होता है मेड्यूसा फॉर्म, जो कि फ्री स्विमिंग एक्वेटिक एनवायरनमेंट में करते हैं, फ्रीली ये घूमते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. नाउ द अनदर point of the general characters of Coelenterata is the acoelomate. Acoelomate means their body cavity is not lined by the mesoderm. When the cavities are lined by the mesoderm, then that phylum has the coelomate characteristic. But here in this phylum, the only one cavity is found, that is the gastrovascular cavity, which we'll study further, and which is more like a coelentron. And so this phylum is the acoelomate because their cavity is not lined by the mesoderm. तो यहाँ पे तो जो सीलोम होता है वो मीजोडर्म की लाइनिंग उसमें नहीं पाई जाती है, वो तो उस फाइलम को हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो कोई कैविटी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे एक कैविटी सिर्फ हमें देखने को मिलती है, दैट इज नोन, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. और वो भी कैविटी जो होती है उसमें जो लाइनिंग होती है वो मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं देखने को मिलती है, तो वो ट्रू कैविटी नहीं होती. तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट point is the digestion. Now what type of digestion is found in the phylum Coelenterata? Phylum Coelenterata, they have two process. Phylum Coelenterata, they show intracellular digestion also and the extracellular also. Now what happens is that how they show both types of digestion. Suppose this is the body of the Coelenterata. These are the tentacles and this is the opening, and this is the central cavity which is found in the Coelenterata, and this cavity is known as the gastrovascular cavity. Okay, so this opening, through this opening the food enters into the body cavity, and this opening, it serves as the mouth from which the food enters into the body cavity, which is the gastrovascular cavity or the coelentron we say it. So the primary digestion of the food takes place in this gastrovascular cavity, and this type here the digestion is extracellular. Now this cavity is lined by a lining that is known as the gastrodermis. Gastrodermis lining is found around this gastrovascular cavity. Now these gastrodermis, they consist of cells, which cells secrete certain enzymes into the gastrovascular cavity, where the breaking down of the food takes place. So the primary digestion is done in the gastrovascular cavity, and that form of digestion is known as the extracellular digestion. After the breaking down of food,
These food particles are being phagocytosed by the cells of the gastrodermis. And whatever digestion takes place inside the cells of the gastrodermis, that is known as the intracellular digestion. Means कि जो डाइजेशन सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है और इंट्रासेल्यूलर भी होता है. कैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है? इनमें जो कैविटी पाई जाती है, जो हमने बताया कि इनमें एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. उस कैविटी में क्या करता है? फूड एंटर करता है. वहां पे फूड एंटर करने के बाद क्या होता है कि वहां पे प्राइमरी डाइजेशन हो जाता है फूड का, मतलब फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं. फूड का ब्रेक डाउन कैसे होता है? सर्टेन एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स कौन सीक्रेट करते हैं? जो सेल्स होती हैं गैस्ट्रोडर्मिस की. गैस्ट्रोडर्मिस की सेल्स, जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है वो लाइन करता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को, और उन गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट में. तो प्राइमरी डाइजेशन जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है उसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. तो वहां पे जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में. फिर वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फैगोसाइटोस्ड हो जाते हैं, या फैगोस, जो गैस्ट्रोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस फिनोमेना शो करती हैं, जिससे वो जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फूड के वो उसको फर्दर डाइजेशन उनका करती हैं. तो जब सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मिस डाइजेस्ट करती हैं फूड को तब हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डाइजेशन इन द सीलेंट्रेटा, द एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. Extracellular digestion, the primary digestion is done by the gastrovascular cavity, whereas the intracellular digestion is done by the cells of the gastrodermis. Now we come to the next point, is that these coelentrates, they consist of the tentacles. What are these tentacles? These tentacles, they are the finger-like projections. Suppose this is the body of coelenterate. Suppose. So these out projections of its body, these are known as the tentacles. Okay. So these are known as the tentacles. इनको हम क्या बोलेंगे? Tentacles बोलेंगे. And they are present at the opening of the body of the coelentrates. So these tentacles, they are the finger-like projections, and they consist of the cells that is known as the cnidocytes or the cnidoblast. Now these cells, the cnidocytes, or we can say it the cnidoblast, these cells are present on the tentacles and overall body of the coelenterata. So that's why these coelenterata are known as the cnidarians. Why they are termed as the cnidarians? Because they consist of the cell named cnidocyte. That's why these phylums are also known as cnidarians, because of the presence of the cell that is known as the cnidocytes. Now these cnidocytes, they consist of the stinging capsules, which is known as the nematocytes. Now what is the function of these nematocytes or these stinging capsules? They help in the adhesion, that means attachment to the substratum. They help in the capturing of the food capture process, and the offense and defense mechanism in case of the protection of the body. These nematocytes, they perform these functions, and these nematocytes are present in the cnidocytes or the cnidoblast cells, which are located on the tentacles and overall body of the coelenterata. That means कि जो coelenterata है उनमें क्या देखने को मिलता है? हमें टेंटिकल्स देखने को मिलती हैं जो कि ऊपर माउथ की ओपनिंग में पाई जाती हैं, और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. फिंगर की तरह ये प्रोजेक्शन बाहर ऐसे निकलते हुए दिखेंगे, और इनमें टेंटिकल्स में कौन सी सेल होती हैं? नीडोसाइट्स हम उन्हें कहते हैं, या इसी को नीडोब्लास्ट्स कहते हैं.
तो क्योंकि ये नीडोसाइट्स पाई जाती हैं सीलेंट्रेटा में, टेंटिकल्स में देखने को मिलती हैं, ओवरऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में भी ये सेल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इस फाइलम को निडेरिया भी कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है नीडोसाइट सेल। ये जो नीडोसाइट सेल होती हैं, इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं, उन कैप्सूल्स को हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट्स। और ये जो नेमेटोसिस्ट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? ये बॉडी को अटैचमेंट, अडेशन प्रोवाइड करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और ऑफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, एट द प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करता है, और बॉडी को बचाने में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये टेंटिकल्स। और क्योंकि इसमें नेमेटोसाइट्स मिलते हैं, तो ये सारे फंक्शंस नेमेटोसाइट्स के थ्रू टेंटिकल्स परफॉर्म करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन. In Coelenterata, reproduction, both type of reproduction could be seen, the asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction by the process of budding or by fission, and sexual reproduction by the fertilization of the ovum and sperm. Now next point comes to the development. Here the larval formation takes place, and the larva is the free swimming ciliated larva, which is known as the planular larva. सो यहाँ पे जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसा होता है ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जो कि फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा होते हैं, उनमें सीलिया पाया जाता है, और उन लार्वा को हम क्या कहते हैं? प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं. नाउ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम is the presence of coelentron that I have earlier discussed with you all. It consists of only one cavity, which is known as the coelentron, and which is basically the central gastrovascular cavity, which is termed as mouth. And this mouth is present on the structure that is known as the hypostome. And the first time appearance of that particular opening from where the food could be ingested, that is first time was seen in the Coelenterata. So we can say the first time mouth formed, that was in the phylum Coelenterata, and this particular opening is also responsible for the egestion of the food, means the ingestion and egestion both takes place with the same opening. So it could also be termed as the anus, this particular opening. And this opening, this is the characteristic feature of this phylum Coelenterata, because this single opening, that is known as the central gastrovascular cavity, is known as the coelentron, which is termed as the coelentron. And that's why this phylum is known as the Coelenterata, because of the presence of that cavity known as the coelentron. तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम Coelenterata का, वो क्या है कि इनमें जो कैविटी पाई जाती है, जिसको हम coelentron कहते हैं, और उस क्योंकि ये कैविटी पाई जाती है, इसको हम coelentron कहते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम भी Coelenterata पड़ा. और इस पर्टिकुलर coelentron को हम कहते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो कि एक सिंगल ओपनिंग होती है और एक हाइपोस्टोम स्ट्रक्चर पे देखने को मिलती है. और ये जो है यहाँ से फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पूरा यहाँ से एंट्री होगा इस ओपनिंग से गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में. तो ये जो ओपनिंग होती है, उसी को हम माउथ टर्म करते हैं जब ये इंजेक्शन ऑफ द फूड होता है. और इसी ओपनिंग से जो फीकल मैटर है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो बाहर जाता है, जिसको हम इजेशन कहते हैं, तो इसी ओपनिंग से होता है. तो इसको हम एनस के तरह भी इसको भी ट्रीट किया जाता है. तो फर्स्ट टाइम क्योंकि माउथ ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली, फूड का इंजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, तो इसीलिए जो है इसको फर्स्ट टाइम माउथ यहाँ पे फॉर्म हुआ, ऐसा देखने को मिलता है. So now let us see some examples of Coelenterata, like Physalia, known as the Portuguese man of war, Adamsia sea anemone, Perinatula sea pen, Gorgonia sea fan, Menandrina brain coral. And
Obelia cipher, one of the most interesting example of the phylum Coelenterata is the Obelia. Why? Because Obelia shows metagenesis. Metagenesis means alteration of generation. That means the two forms of Coelenterata, that is the polyp form and the medusa form, these two forms are found in the Obelia, and they show, the Obelia shows the alteration of generation. That means if it forms polyp, then polyp by asexual means produces medusa, and the medusa so formed by sexual means produces polyp. These two body forms are found in the Obelia, and that too they show the alteration of generation. That means polyp get transformed into the medusa through the asexual process, and medusa get transformed in the polyp through sexual process. However, only polyp forms are Hydra, Adamsia. They are only polyp forms. And these polyp forms are sessile, that means they are sedentary and cylindrical. They are cylindrical shape. They are of cylindrical shape. And the only medusa forms are the Aurelia. And these medusa, they are the umbrella shape. Their shape is umbrella-like, and they are free swimming. They are found swimming in the aquatic environment freely. So these are the only medusa form is the Aurelia, only polyp form is the Hydra and Adamsia, but the example where the alteration of generation takes place, that example is known as the Obelia. So Obelia is the very interesting example of the phylum Coelenterata because it shows the alteration of both the generations of the phylum of both the generations, that is between polyp and the medusa. So all together we can say type बॉडी को फॉर्म करते हैं. इनकी जो बॉडी के शेप होता है वो मल्टीपल फॉर्म्स में देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम Coelenterata. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, and please keep watching and keep studying. Go through all my previous videos and keep studying, and till then take care. Thank you.